Good evening, students. Today we are going to see the line by line explanation for the lesson Chand Ki Sair, lesson 8, class 4, VITAAN PATAMALA book. Hope you have seen my previous video, the line by line reading of the video and understood the pronunciation for this lesson. Today we will see the explanation. Before getting into the explanation, we'll see a quick introduction. In this lesson, we are going to get some details, scientific details about moon and who are the first person who landed, what dress they have to wear, what is the eating habit for them. All the such details we are going to get from this lesson. So this is a little bit of science related topic and it will be a very interesting topic because we are seeing moon from every day. We are seeing the moon, right? Have you all seen the moon? மூன் பார்த்துருக்கீங்களா? எஸ். ஸோ ஒரு நாளைக்கு மூன் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸில் இருக்கும் இல்லையா? பார்த்துருக்கீங்களா? சம் டேஸ் இட் வில் பி இன்க்ரீஸிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும். சில நேரத்தில் அது சைஸ் கம்மியாகிட்டு இருக்க ஸ்டேஜில் இருக்கும். சில நேரத்தில் ஃபுல்லாக இருட்டாக இருக்கும். சில நாளில் ஃபுல்லாக பிரைட்டாக இருக்கும். Do you know which day the moon will be fully bright and full round? Can you tell me in the comment section? And do you know on which day the moon will be so dark? Illave irukadu. Moon won't be there. On which day it is? Put me in the comment section. Ask your parents or grandparents and let me know on which 2 days moon will be full and moon won't be there. Okay. Now, what we have to learn from this lesson after reading the lesson, the learning outcome should be as usual. The pronunciation you should understand. Vocabulary you have to increase and you should think wisely. You should be able to understand your environment. You should love the nature. You should set a goal for yourself, and to reach the goal you have to use your intelligence, hard work and courage. Without using the intelligence, hard work and courage, we would not have landed on moon. Chandrayaan 3 is one such example for India, right? So this lesson, after reading this lesson, what you have to learn is you have to set some goal for you. You have to be very curious. You should cultivate the habit to learn something new from your environment, and to learn something, to achieve something, you should do the hard work. You should be very courageous enough. So this is going to be the learning outcome of this lesson. Have you all seen moon? Moon பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ சில நாளில் கம்மியாக சில நாளில் டிக்ரீஸ் ஆகுது. மூணில் சில இமேஜஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? நாம் என்ன யோசிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி இமேஜ் தெரியும் நமக்கு சில நேரத்தில். Go and observe, do this activity, small activity. Observe the moon, see what are the images you can see. So take some time to observe moon every day and understand what are the shapes you can able to see in the moon. So this is for your self understanding that maybe you will find out something new or something interesting. Try out. Observe this picture. Yes, Madhav and Lata are sitting on the bed. Grandfather is reading some book. Can you see the moon from the window? Yes, it's full, looking very bright, very smiling. And can you see a cloud over there? This is a thinking. So both the kids are thinking about earth and moon. Okay, this is the thoughts that is revolving around the kids. Let's do the lesson reading now. लता और माधव अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे. ஸோ லதா அண்ட் மாதவ் ஆர் சிட்டிங் ஆன் த பெட். பிஸ்தர்னா காட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க காட்டில். अपने अपने मीन्स इन देयर कॉट. खिड़की से पूर्णमासी का गोल रूपहला चांद दिखाई दे रहा था. सो खिड़की से मीन्स फ्रॉम द विंडो दे कैन सी पूर्णमासी. पूर्णमासी मीन्स फुल मून. का गोल रूपहला सी कैन यू सी इन द इमेज. पूर्णमासी का फुल गोल्ड राउंडाக இருக்க சில்வர் கலர்டு. ரூப்ஹலா மீன்ஸ் சில்வர் கலர். So what they were able to see from the window? The round full moon, silvered colored moon. Okay. रूपहला में सिल्वर्ड. चांद दिखाई दे रहा था. दोनों प्रसन्न मन चांद को निहारने लगे. So दोनों here is மாதவன் லதா ரெண்டு பேருமே பிரஸ்ன மன் மீன்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷமாக வெரி ஹாப்பிலி தே வர் ஸ்டேரிங் அட் த மூன். निहारना मीन्स कंटिन्यूसली स्टेयरिंग और वॉचिंग. उन्हें चांद में अलग अलग आकृतियाँ नज़र आ रही थी. सो அவங்களுக்கு उन्हें इज़ द सर्वनाम यूज्ड फॉर लता एंड माधव. चांद மேலே சாந்தில் ஆன் த மூன்
they can see different अलग अलग means different आकृतियाँ means shapes नज़र आ रही थी. Have you observed the moon, children? You too would have seen some shapes, right? மரம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு sheep மாதிரி இல்லை யாரோ போட்டில் போயிட்டுருக்க மாதிரி. Go and observe the moon. You will also see different kinds of shapes in the moon. Let me show you some pictures. இப்போ மூனை பார்க்கும்போது அந்த டார்க் அண்ட் ஒயிட் பேச்சஸ் இருக்குல்ல, அது பார்க்கும்போது இட் வில் பி லைக் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் லைன் மாதிரி. சி ஹேர் மாதிரி, ஃபேஸ் மாதிரி, ஹேண்ட்ஸ் மாதிரி, யாரோ படுத்துட்ருக்க மாதிரி, someone is sleeping. So like this we can see many different shapes in the moon. Go and observe the nature. Moon observe பண்ணுங்க. Now you will understand what Madhav was trying to say here. That different shapes. ஒரு 2 or 3 daysக்கு போய் observe பண்ணி பாருங்க. Definitely you will see different shapes. पास में ही दादाजी किताब पढ़ रहे थे. So nearby only the grandfather. दादाजी is father's father. किताब पढ़ रहे थे means he was reading the book. So till here what? Introduction. The scene என்ன இருக்கு? Madhav and Lata are sitting on the bed. From the window they can see the full moon, round silvered full moon from the window. They were happily staring at the moon and they could see different shapes on the moon, and nearby the grandfather is reading the book. दादाजी, चांद पृथ्वी से कितना दूर है? Now माधव ने सिर कुजाते हुए पूछा. See, कुजाते means scratchingly. Head scratch பண்ணிக்கிட்டே, sir means head scratch பண்ணிட்டு, Madhav is asking to grandfather how long the distance between the Chand and the Prithvi is. மூணுக்கும் எர்த்துக்கும் எவ்வளோ distance இருக்குது, like that Madhav is asking by scratching his head. 2 lakh मील से भी आगे. So now grandfather is replying it's more than 2 lakh miles. यदि कोई दिन रात लगातार चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा जानते हो? So if anyone is walking day and night, okay, दिन रात means day and night, लगातार means continuously. If someone is walking, do you know how long it will take to reach moon? Like that the grandfather is asking the question. अब सवाल पूछने की बारी दादाजी की थी. So now the turn to ask question was grandfather's. Madhav has asked the first question, the distance between the moon and the earth. Now the grandfather is asking his turn question, like, do you know how long will it take if someone has to walk continuously day and night to reach moon? माधव और लता दोनों एक दूसरे के मुंह देखने लगे. So if the both Madhav and Lata, after hearing the question, they don't know the answer, so they were seeing each other's face. मुंह देखना means seeing the face. लगभग 219 वर्ष 219 वर्ष लगेंगे. So if someone is going to walk continuously day and night to reach moon, it will take nearly 219 years. So शब्दार्थ पारेंगे. रूप हला चांदी के रंग का में सिल्वर कलर. निहारना मीन्स देखना, सीइंग, वाचिंग. आकृति मीन्स शक्ल, बनावट. ढांचा मीन्स शेप्स. ओके, दादाजी ने बात आगे बढ़ाई और बताया. नाउ द ग्रैंडफादर एज moved to talk further. Okay, बात आगे बढ़ाना मीन्स he was the conversation moved further. और बताया, चांद रात में रोशनी देता है and moon during the night time it gives the illuminates the light, right? रोशनी देता means it illuminates. लेकिन बच्चों, उसके पास स्वयं की रोशनी नहीं है. But listen kids, but the moon doesn't have its own light. स्वयं means self இருக்காது. रोशनी means light. वह तो सूर्य के प्रकाश से ही चमचमाता है. It shines because of the light from the sun. It takes the light from the sun. The whatever light it absorbs during the daytime, it illuminates in the night time, right? That is only happens. A natural process that the moon doesn't have its own light. Whatever light it absorbed in the daytime from the sun, it shows off during the night time. तो वह सूर्य के प्रकाश से ही, सूर्य के प्रकाश means the light of sun. प्रकाशना light, सूर्य means sun. चमचमाता means it shines.
अच्छा दादाजी, चांद बड़ा है हमारा पृथ्वी, लता ने उत्सुकता से पूछा. Now, with a lot of curiosity, utsukta means curiously, Lata has asked the grandfather, which one is big, whether the moon or the earth? Do you know? चांद हमारी पृथ्वी से बहुत छोटा है. So the moon is small from the earth. It's nearly 27% smaller than earth. Okay. So चांद हमारी पृथ्वी से, चांद moon is हमारी पृथ्वी means our earth थोड़े बहुत छोटा means it's very small compared to earth. दादाजी, मुझे चांद पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे थे. क्या चांद पर हमारी पृथ्वी की तरफ पेड़ पौधे हैं? माधव ने लड्डू मुंह में डालते हुए पूछा. So putting the laddu into his mouth, Madhav is asking the question to grandfather. I could see some trees on the moon. Whether like earth, in moon also there are trees and plants. So what was his question? So when he was observing the moon, he could see some plant shape or tree shaped on the moon. So by putting the laddu, by eating the laddu in his mouth, he is asking the question to grandfather whether in earth, like earth also, in moon whether there are plants and trees. ஸோ நான் வந்து மரம்லாம் பார்க்குறேன் மூணில். ஸோ ரொம்ப எர்த்து மாதிரி மூன்லேயும் மரங்கள் செடிகள் இருக்கா அப்படின்றத மாதவ் வந்து லட்டு வாயில் போட்டுக்கிட்டே கேட்குறாரு. चांद पर पेड़ पौधे नहीं हैं. सो चांद मून ट्रीज एंड प्लांट्स आर नॉट देयर. पशु पक्षी भी नहीं है. बर्ड्स एंड एनिमल्स கூட கிடையாது. पता है क्यों? डू यू नो वाई? वहाँ हवा नहीं है. बिकॉज देयर इज़ नो एयर इन मून. चांद पर हवा ना होने से हम किसी तरह की आवाज़ भी नहीं सुन पाते. बिकॉज देयर इज़ अ वैक्यूम, देयर इज़ नो एयर, मीडियम इज़ नॉट देयर. वी कैन नॉट हियर एनी साउंड ऑल्सो. लगता है जैसे बहरे हो गए. सो इफ़ यू गो एंड स्टैंड ऑन द मून यू विल फील दैट यू हैव बिकम डेफ. बहरे मीन्स डेफ आई टू. बिकॉज देयर इज़ नो मीडियम, नो एयर, सो यू कैन नॉट हियर एनीथिंग. दादाजी ने बताया. सो दादाजी टोल्ड. सो व्हाट, हाउ द मून इज़? Moon doesn't have any plants and trees. Moon doesn't have any animals and birds. Pashu means animals, Pakshi means birds. और क्योंकि because there is no air, हवा இல்லை, காற்று இல்லை. ஸோ காற்று இல்லாததுனால அங்கே எந்த சவுண்டுமே நம்ம கேட்க முடியாது. We can hear anything because of the medium. When medium doesn't exist, ஒரு மீடியம் அந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ் போகிறதுக்கான மீடியமே இல்லாததுனால we cannot hear anything. So if you stand on the moon, it will be like you are a deaf person. फिर क्या है चांद पर? अब लता ने पूछा. नाउ लता इज आस्किंग, देन व्हाट इज देयर इन द मून? चांद की ज़मीन पर बहुत सी दरारें और गड्ढे हैं. सो इन द मून द सरफेस, जमीन ना लैंड, द सरफेस ऑफ द मून हैज़ मेनी क्रैक्स एंड पिट्स. दरारें ना क्रैक्स, गड्ढे ना पिट्स. क्योंकि चांद की ज़मीन ज्वालामुखियों से बनी है. बिकॉज the surface, the land has been made in the moon by the volcanoes. Jwalamukhi means volcano. Have you seen the volcanoes, children? Lava from the earth. நம்ம எர்த்தில் volcanoes வரோன்னா எங்கே டவுன் ஆஃப் த எர்த்தில் இருக்க அந்த ஹாட் லாவா, the pressure தாங்க முடியாது, it flows out. Right? Can you comment me in the section? எங்கே நிறைய volcanoes நம்ம எர்த்தில் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு any one or two place where volcanoes eruption happens? Can you put me 2 places? Go and search in the Google where volcanoes happens in earth. Okay, so like this only the crust is formed on the moon. So because of that the surface will be having very pits நிறைய இருக்கும், cracks நிறைய இருக்கும். एक मज़े की बात और बताऊं? Shall I tell one more interesting fact? चांद पर 15 दिन तक लगातार दिन और उजाला रहता है. So in the if you go to moon for the first 15 days it will be sunny. Day time தான் இருக்கும், நைட்டே இருக்காது. और 15 दिन तक रात, and next 15 days will be night. So this is what he gives the information. Shall I tell one more interesting fact? चांदல போனால் first 15 days it will be a night or full night, or full 15 days will be day. So लगातार means continuously it will be day, and उजाला रहता means light will be there. 15 दिन तक रात, next 15 days it will be full of chillness, அப்படியே சேஞ்ச் ஆயிடும்.
नाइट आइडों फुल ऑफ चिलनेस தான் இருக்கும் फिर तो वहाँ मज़े से खूब सो सकते हैं दोनों बच्चे चहकते हुए बोले so as soon as they heard from the grandfather that 15 days will be night the two kids started tripping that then we can sleep nicely for 15 days isn't it every kid will like to sleep for more time right so when it is 15 days it's a continuously night for the moon then if you are going on landing on the moon then you have to sleep for 15 days only right अच्छा चलो अब तुम लोग सो जाओ नाउ लेट यू पीपल स्लीप बहुत रात हो गई इट्स बीन वेरी लेट कल तुम्हें एक पुस्तक दूंगा टुमारो आई गिव यू वन बुक चांद की सैर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक चांद की सैर द प्लेजर ट्रिप ऑफ मून उसे पढ़ना और चांद के बारे में ढेर सारी बातें मालूम करना so you read that book and understand lot plenty of details about moon ढेर सारी means plenty of मालूम करना means தெரிஞ்சுக்குங்க you know about lot of information about moon which book it is चांद की सैर दादाजी ने दोनों को चादर उड़ाकर सुला दिया चादर उड़ाकर मीन्स चादरना அந்த பெட்ஷீட் உடாக்கர் மீன்ஸ் ரேப் பண்ணிட்டு போத்தி விட்டுட்டு he made the kids to sleep सुला दिया means he made the kids to sleep सुबह उठते ही आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग माधव और लता दोनों पुस्तक की ओर लपके सो ரெண்டு பேருமே as soon as they got up they both wanted to catch up the book लपके means to catch up the book दोनों ने आगे की कहानी पढ़नी शुरू की so the दोनों started to read the further information that is given in the book चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है it's a gravitational force so what is gravitational force children when you put a stone it comes down right drop it drops does it fly no so the force that pulls the stone to come to the land and the surface ku varadhukku and the pulling force is known as gravitational force so எர்த்துல நீங்க ஏதாச்சும் தூக்கி போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பா அது கீழே வந்து விழுந்துரும் because there is a gravitational force each and every part ஸோ ஆனால் மூனில் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ரொம்பவே கம்மி ஸோ இப்போ ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் அங்கே தூக்கி போட்டால் கீழே வரத்துக்கு இட் வில் டேக் மோர் டைம் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸை ஹிந்தியில் என்ன சொல்லணும் குருத்வாகர்ஷன் குரு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி படிங்க குரு ஆதா த வா துவா க ர கப்புறம் ர படி கர்ஷன் गुरुत्वाकर्षण रिपीट अगेन गुरुत्वाकर्षण इज ग्रेविटेशनल फोर्स अब ये कौन सी शक्ति है नाउ द किड्स आर आस्किंग व्हाट इज दिस पावर इज இது என்ன एनर्जी एक कंकड़ ना पेबल और स्टोन को आसमान की तरफ फेंको सो यू थ्रो द स्टोन टूवर्ड्स द स्काई மேலே தூக்கி போடுங்க फेंको मीन्स थ्रो तो वह तेजी से धरती की तरफ खींचा चला आएगा सो as soon as you put the stone above towards the sky it will at once come towards this land right धरती ना ज़मीन land के पाते திருப்பி கீழே வரும் धरती की तरफ ना towards downwards से இப்போ வரும் यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति है सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ये शक्ति चांद में बहुत कम है सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी लेस इन मून पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर का छठवां भाग चांद में सो छठवां भाग मीन्स 1/6 सो लेट्स अज्यूम एर्த்தில் வந்து 100 இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்போ மூணில் எவ்வளோ இருக்கும் 1/6 of 100 ஸோ டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் 6 ones are 6 4 6 6 are 6 36 4 so 16.16% so 100 எர்த்தில் இருந்துச்சுன்னா மூணில் 16.16 or 17% you can keep okay so this is the difference எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அங்கே எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது இங்கே 100 இருந்தால் அங்கே 17 தான் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் an assumption for you to understand 1/6 எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக I just gave this example सो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का छठवां भाग चांद में है इसलिए बिकॉज ऑफ दैट अगर वहाँ हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहिए सो हम याराச்சும் ஒரு கையில் தூக்கணும் in a single hand if you want to lift someone so you can easily lift someone because you don't have any gravitational force you don't have to strain much so चाहे तो आसानी से ரொம்ப ईजी है you can lift उठा सकते हैं मीन्स lift up तुम हल्की सी छलांग
लगाओगे. So லைட்டாக கொஞ்சமாக ஜம்ப் பண்ணா வச்சுக்கோங்க. இல்லை இப்படி ஜம்ப் பண்ணாலும் லம்பி தூரிகம் மீன்ஸ் ரொம்பவே ஹைட் போயிட முடியும். If you just slightly if you put one jump you will reach to a ரொம்ப ஹைட் ரீச் ஆகிடலாம். ஆனால் இடத்துலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் ஜம்ப் பண்ணால் பிகாஸ் ஆஃப் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் we will not be able to move towards upward. ரொம்ப ஸ்பீடாக போக முடியாது, இல்லை ரொம்ப ஹைட்டுக்கு போக முடியாது. பட் on the moon if you go and do a little small jump you will reach இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய லாங்காக போயிடலாம். ஓகே, லாங் சக்தியோன்னா டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ண முடியும். We'll see the शब्दार्थ here. स्वयं ना खुद सेल्फा. ओके, उत्सुकता जानने की इच्छा क्यूरियोसिटी ओड़ा. ज्वालामुखी में पर्वत शिखर जिनसे आग निकलती हो. So this is volcano. गुरुत्वाकर्षण शक्ति is gravitational force. धरती की अपनी ओर खींचने वाला शक्ति எல்லாத்தையும் அது கிட்ட towards the earth அது இழுக்குது இல்லையா, the force that pulls everything towards itself is known as gravitational force of the earth. Now अब मुश्किल ये है कि चांद पर पहुंचा कैसा जाए. सो நம்ம இவ்வளோலாம் சொல்கிறோம், if you go to moon, if you do that, மூனில் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும். பட் the very difficult part is how to reach the moon. मुश्किल means difficult. चांद पर पहुंचा कैसे जाए, how to reach the moon. चांद तो पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष में है. सो moon is very far away from the earth in the space. अंतरिक्षना space, spaceல ரொம்பவே டிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. वहाँ जाने के लिए साधारण विमान की नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान की ज़रूरत होती है. So to go to space you cannot use the aircraft. Normal aeroplane எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. For that a specially designed spacecraft is needed. अंतरिक्ष यान means spacecraft is needed. की ज़रूरत means needed. चांद पर हवा नहीं है, so there is no air on the moon. So நீங்கள் நம்ம இப்போ போகணுன்னா நம்மளுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் we have to carry, right? इसलिए आवश्यकता के अनुसार हवा साथ ले जाई जाती है. So if you're going to travel to moon there is no air, so for you to inhale and exhale பண்ணுறதுக்காக you have to carry your own oxygen cylinder. So உனக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை நீ தான் எடுத்துகிட்டு போகணும். हाँ, एक ज़रूरी बात. हाँ, and one important thing, अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए to travel in the space विशेष वस्त्र की भी ज़रूरत है. You have to wear a special designed dress. You cannot just put a normal cloth and you can go to the space. You should have the astronaut, like astronauts have you seen, அவங்க டிசைன் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா. I'll show this. இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு தான் you can go with the cylinder, oxygen cylinder carrying oxygen cylinder. You have to wear some special designed dress which is astronauts போடுற dress. Okay, so that will control the vacuum and the pressure, temperature எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக they have a specially designed dress. अंतरिक्ष में वैसा भोजन नहीं किया जाता जैसा हम पृथ्वी पर करते हैं. and you cannot eat as you eat in the earth. ஸோ ஸ்பேஸில் சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் இங்கே சாப்பிட்ற மாதிரி ரசம் சாதம், தயிர் சாதம், சாம்பார் சாதம், சப்பாத்தி, all those things you cannot eat in the space. वहाँ केवल शक्तिदायक एनर्जी गिविंग पौष्टिक न्यूट्रिटिव गोलियाँ टैबलेट्स தான் சாப்பிட முடியும். ओके, प्यास लगने पर एंड फील थर्स्टी विशेष रूप से तैयार किया गए फलों का रस. So specially made juices of the fruits only you can have as a drink there. Okay, if you हम अंतरिक्ष यान में चलते नहीं हैं. So if you go and sit in the spacecraft you will not sit, you will just float. Okay, you cannot walk in the spacecraft also, you will be floating. बल्कि तैरते हैं क्योंकि वहाँ चुंबकीय शक्ति नहीं है, क्योंकि there is no magnetic effect over there. I'll show the image of the spacecraft and the astronaut wears. Okay, and that's just by surface tension. And then you can drink it. It's where everybody meets in the morning. After you wash your face, brush your teeth, you want to find something for breakfast. And this is our kitchen. You might notice there's all sorts of foods here. It's like opening the refrigerator. You got all your different stuff that you want. So you can see the space shuttle. Okay, so different parts are there, and when it moves to one latitude, one part will get removed so that the weight is also reduced when it goes to the top.
So we saw the few clips of Sunita Williams in the spaceship, right? And I also showed the spacecraft. So I'll give the link in the description box. You go and watch the full video if you are interested to know how the spacecraft will be. Okay. So there is no magnetic effect. You will be floating in the spaceship. क्या तुम जानते हो कि चांद की ज़मीन पर सबसे पहला कदम किस व्यक्ति ने रखा था? So do you know who stepped in first on the surface of the moon? उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 20 जुलाई 1969 1969 20th जुलाई 1969 ये तारीख, दिस डेट एवरीवन नोज, सब एवरीवन विल रिमेंबर, सबको याद है क्योंकि इसी दिन अंतरिक्ष यान चांद के पास पहुंचा था। सो ड्यूरिंग दिस डे ओनली द स्पेसक्राफ्ट वाज एबल टू रीच द मून। इसमें 3 यात्री थे। सो इधर एतने पेर இருந்தாங்க? 3 பேர். Do you know who were there? This was Apollo 11 mission. So there were 3 people were there. See, these 3 people were there on that spaceship. Collins Michael, Edwin Aldrin and Neil Armstrong. Okay. So he is Neil Armstrong who first stepped in on the moon's surface. See how they are, with the astronauts or dress wear பண்ணிட்டு they are just posting the flag. So they are from US, so they are US or a flag they are hosting there. You can see some videos also how they were jumping and they were exploring the moon. You can add the video, நிறைய videos இருக்கு யூடியூப்ல, you can go and check also. अंतरिक्ष यान का एक छोटा हिस्सा बड़े भाग से अलग होने लगा. So I've showed you the spaceship, right? There are different parts. So as you go upper and upper latitude, increase ஆயிட்டே இருக்கும்போது ஸ்பேஸ்கிராஃப்டில் இருக்க அந்த ஸ்பேஸ்கிராஃப்டில் இருக்க சில பாகம்லாம் விழுந்துடும் கீழே. It will get detached itself, okay? So like that, the small part of the spacecraft was landing on the moon surface, and orbitல the bigger part is there where Colin was sitting, okay? Colin actually didn't walk on the moon surface. He was Michael Collin irkarla, அவர் வந்து he didn't had a walk, he didn't step on the moon surface. The step on பண்ணவங்க வந்து வெறும் எட்வின் and Neil Armstrong only stepped in. இவங்க 2 பேர் தான் இந்த ஸ்மாலர் செக்ஷனில் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க. சோட்டா இஸ் ஸ்மாலர் சைட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்பேஸ்ஷிப்பில் உட்காந்துட்டு இருந்தவங்க. அண்ட் மைக்கேல் கோலின்ஸ் வாஸ் இன் த ஆர்பிட்டில் இருந்தார், ஓகே? ஹீ டின்ட் காட் அவுட் டு த லூனார் சர்ஃபேஸ். சப்போஸ் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஆயிருந்ததுன்னா, இஃப் சம் எக்ஸ்ப்ளோஷன் would have happened, அந்த டெம்பரேச்சர் செட் ஆகலை, ப்ரெஷர் செட் ஆகலை, அவங்க கீழே வந்தோடனே ஏதாச்சும் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆயிருந்ததுன்னா கோலின் மட்டும் தான் ரிட்டர்ன் ஆகிருப்பார், ஓகே? பட் இவ்வளோ இதுலேயும் நல்லது என்னென்னா நத்திங் வாஸ் ஹேப்பன், தே வாஸ் சேஃப், தி 3 ரிட்டர்ன் பேக், ஓகே? ஸோ லூனார் சர்ஃபேஸில் இறங்கினவர் வந்து எட்வின் ஆல்ட்ரின் அண்ட் நீல் ஆர்ம்ஸ்ட்ராங். ஆர்பிட்லேயே இருந்தவங்க வந்து வெறும் கோலின்ஸ், ஹீ டின்ட் ஸ்டெப் அவுட். बट 3 பேர் தான் they were the first person to reach the moon, okay? So अंतरिक्ष यान का एक छोटा हिस्सा बड़े भाग से अलग होने लगा. The smaller part of the spacecraft started to get separated from the spacecraft, and इस छोटे हिस्से में 2 यात्री थे, and in the smaller part of the spacecraft 2 பேர் தான் இருந்தாங்க. Who were there? Neil Armstrong and Edwin Aldrin. ये छोटा हिस्सा चांद के चक्कर लगा रहा था, एंड द स्मॉल पार्ट ओनली वॉज रोटेटिंग नियर द सर्फेस ऑफ मून. चक्कर लगाना मीन्स घूमना, इट वॉज राउंडिंग. अंतरिक्ष यान का दरवाज़ा खुला, द डोर ऑफ द स्पेसशिप वॉज ओपनड. आर्मस्ट्रॉन्ग सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरा. सो आर्मस्ट्रॉन्ग स्लोली गॉट आउट ऑफ द स्टेप्ड आउट, ओके? उसने चांद पर अपना पाँव रखा. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप हिज लेग्स, ओके? पाँव அவரோட லெக்கை வச்சார். तब उसने कहा, सो दैट टाइम ही सेड, ये मनुष्य का सबसे छोटा कदम है. सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेप ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, बट मानव जाति का द होल ह्यूमन कम्युनिटीயோட एक वेरी बिग सक्सेस बिकॉज रीचिंग द मून एंड वॉकिंग ऑन द मून. सारा संसार खुशी से झूम उठा. खुशी से झूम उठा is a मुहावरा, idioms and phrases. It's like very happy, feeling very happy, okay? The whole world felt so happy because there was someone who has moved from here and has stepped out from moon and able to walk. दूसरा यात्री, the second person was Edwin Aldrin.
बी यहाँ से उतरा. So second, this person also got down. दोनों चांद पर चलने लगे. The both started to walk on the moon. Where रुक रुक कर means slowly stop by தான் நடந்துட்டு இருக்காங்க. Because there is no gravitational force இல்லை. They were not able to balance themselves and it is all volcanic ஓட lands இருக்கனால lot of cracks and pits were there. So they அந்த astronaut suitல they were not able to do it okay as perfectly as we walk on the earth மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது. So they stop by தான் they were walking and let kadar कर stumble ஆகிட்டு கீழே விழுந்துருமோ கிர்ஜானா அந்த மாதிரி எப்போ விழுவோம் தெரியாமல் விழுற லெவலுக்கு தான் they were walking on the moon. वहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा so from moon when they saw the earth तो वह खुशी से उछल पड़े. seeing the earth from the moon they were very happy. उछलना खुशी से उछलना means they were jumping with the happiness. जानते हो क्यों? why do you know why? इंसान ने धरती से चांद को देखा. so all these years from the earth only we have seen the moon but this is the first time where someone from the moon they are watching the earth. लेकिन पहली बार किसी ने चांद से धरती को देखा है ना मज़ेदार बात. so very interesting right, interesting conversation right, to learn understand from them their experience like watching the earth from moon. उन्होंने चांद की ऊंची नीची जगह से कंकड़ और रेत का तैलिया में भर लिया. सो व्हाट दे डिड ऊंची नीचिना மேலே கிரேட்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த மேலே இருக்கிறது கீழே இருக்கிற இடத்துல இருந்தாலும் all the places they have taken the pebbles stones and muds and they fill the bags. तैलिया में भर लिया means बैगல fill பண்ணிக்கிட்டாங்க because for the research purpose. वहाँ से पृथ्वी की तस्वीरें ले they have took the photo of the earth also from the moon. I'll show that photo. पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी. सो द अर्थ वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. दिस इज द इमेज ऑफ द फोटो दैट हैज़ बीन क्लिक्ड फ्रॉम द मून्स क्रेटर. मूनोட சர்ஃபேஸில் இருந்து see from the moon surface they are watching the earth. okay see फिर वे वापस यान की ओर लौटे एंड दे रिटर्न बैक टू द स्पेसक्राफ्ट बिकॉज चांद पर पहुंचना मनुष्य की महान उपलब्धि है. सो रीचिंग ऑन द मून वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट. उपलब्धि मीन्स अचीवमेंट फॉर द ह्यूमन कम्युनिटी. अब बच्चे भी चाहे तो चांद की सैर कर सकते हैं. सो नाउ इवेंचुअली इवले इयर्स्க்கு அப்புறம் 69க்கு அப்புறம் there are more scientific technology has increased. Now the kids can also go and see the moon. So will you be one such kid? क्या तुम चलोगे चांद की सैर करने? So the technology, the more and more research is going on to reach Chandrayaan 3 where we are able to reach the south pole of the moon. Okay, so like that the more informations, more scientific technology will improve us like or tour மாதிரி கூட we can go now right. நம்ம within India outside country போகிற மாதிரி there may be chances in future that people kids can go and walk on the moon right like a pleasure trip மாதிரி they can also do because of the science and technology. Kids can also go and have it too. So with the this is what we have for this lesson. Hope you have understood the meanings and understand the line by line and scientific details of the moon. In the next video we'll see the book back exercise. Thank you students.